Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we had already discussed about the angiosperms, which are also known as the flowering plants. We have seen into the common characteristic of these plants, and today we will discuss about the reproductive mechanism in the angiosperms. तो स्टूडेंट्स मैंने ये आपको पहले भी बता चुका है कि ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है और उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ही फ्लावर होता है उनका। फ्लावर में आपको मेल और फीमेल एक साथ मिल जाएंगे कभी कभी, जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। और यूल फाइंड कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स विल बी इन डिफरेंट प्लांट्स, so they are called as unisexual plants. Okay, so these properties we have previously discussed. So today we will discuss about the reproductive mechanism that is seen in case of angiosperms. Okay, so let's begin the topic, reproduction in angiosperms. Now you'll find that some plants are monoecious and some are dioecious, which I just mentioned. Monoecious matlab bisexual. They will have both male and female reproductive part in the same flower. Whereas dioecious are the unisexual flowers, where male flower will be born on a different plant and female flower will be born on a different plant. तो इस तरह से हम इसको दो प्लांट्स डिवाइड कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को दो कैटेगरी में, मोनोइशियस एंड द डाइशियस. Male reproductive organ, it is stamen, or you can call it as androecium, which possess two different structures. One is the anther, the other is the filament. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको स्टेमेन बोला जाता है या फिर एंड्रोइसियम भी बोलते हैं. So students, I have already told you the word andro or the word anthero generally represents your male reproductive part. तो इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन और एंड्रोइसियम, इट विल पोजेस एंथर एंड फिलामेंट, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. नाउ आउट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, एंथर जो होता है इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट व्हिच इज द पोलन ग्रेन्स. तो ये जो पोलन ग्रेन्स हम लोग बोल रहे हैं ये है आपका मेल गैमेट. ओके, सो द मेल गैमेट हियर is the pollen grains. Now similarly, the female sex organ is also known as pistil or gynoecium. Now the word gyno represents female. The pistil consists of three different parts. उसमें तीन अलग अलग parts होते हैं. ऊपर का एक sticky segment रहता है which is called as stigma. Then you have the long stem-like structure called as style, and the base which is more or less oval. It is ovary. तो नीचे का जो बेस होता है वो वास शेप का होता है और उसको हम लोग ओवेरी बोलते हैं. बीच में एक लंबा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको स्टाइल बोला जाता है, और ऊपर एक स्टिकी पार्ट होता है which is called as stigma. Now this ovary will possess the ovule which forms actually the embryo sac. तो ovary के अंदर ovule होता है. Now this ovule has the egg cell. Now this egg cell is the actual female gamete. Okay, so male gamete आपका होता है pollen grain और female gamete होता है आपका egg cell. So this is how the orientation is seen in case of female reproductive part, that is gynoecium or pistil. It consists of three different segments: stigma, style and ovary. Ovary generally present at the base. It is bulge structure, और ovary के अंदर ही होता है ovule और the embryo sac you can call, और उस embryo sac के अंदर egg cell होता है. Now see कि ये जो embryo sac होता है उसमें बहुत सारे cells होते हैं. उसमें antipodal cell होता है, उसमें central cell होता है, उसमें आपका synergid होता है. Alongside it एक फीमेल गैमेट भी होता है जिसको egg cell बोला जाता है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज हाउ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लुक लाइक. तो ये देखिए ऊपर का जो ये सेगमेंट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं. लंबा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको स्टाइल बोला जाता है. और नीचे जो ये बल्ज होके पार्ट है, this is called as ovary which contains the ovule. Now all the three combinedly is called as pistil or the female part of the flower. Similarly, ये जो येलो कलर का आपको सेगमेंट दिख रहा है, दिस इज द एंथर which contains the pollen grain, the male gamete, and it has a connective thread like structure which is called as filament. दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं stamen or androecium you can say, which is the male reproductive part. Besides that you'll also find कि as because flowering plants हैं तो वो लोग pollination पे depend करेंगे, so to attract different insects they also have colorful petals, and at the base you'll also find sepals which are generally green in color. They do not bear any color because वो leafy appendages होते हैं, उनका मतलब attracting insect में कोई function नहीं होता है. Only the petals they attract insects. That is the reason they are very much colorful and very much vibrant in nature. ठीक है, तो ये है आपके दो reproductive parts.
Now, the embryo sac in angiosperm has 7 cells. Okay, so this is what I was telling you in the previous point कि ये जो embryo sac होता है उसमें 7 cells होते हैं. क्या क्या होते हैं? 3 antipodal cells होते हैं, 2 synergids होते हैं. Now ये जो synergids होते हैं they are present on the side of the egg cell. Egg cell के दोनों side में होते हैं और उसको वो लोग protect करते हैं in one way. The egg cell, which is the actual female gamete, और बीच में at the center of the embryo sac you'll have a central cell which will have 2 nuclei. They are called as polar nuclei. ठीक है, तो keeping this into mind, अगर आप लोग एक embryo sac देखोगे तो 3 antipodals, 2 synergid, 1 egg cell and 1 central cell. So total 7 number of cells. But there will be 8 nucleus because antipodal, synergid, egg cell, they have one nucleus each. बट द सेंट्रल सेल हैज 2 न्यूक्लियस, उसमें 2 न्यूक्लियस आ जाता है, तो इसीलिए उसका टोटल न्यूक्लियस नंबर हो जाता है 8. सो इसीलिए कभी कभी एम्ब्रियो सैक को 7 cell 8 न्यूक्लियाई स्टेज बोला जाता है. लेट्स लुक हाउ इट लुक्स लाइक एक्चुअली. दिस इज योर एम्ब्रियो सैक. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर जो होता है चालाजाल एंड बोला जाता है, उसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं. देयर आर 3 ऑफ देम. At the base, 1 egg cell, which is the female gamete, and surrounded by 2 synergids. ये जो दो साइड में है उसको synergids बोलते हैं. बीच में एक central cell है. There is this central cell, but it has 2 polar nuclei. इसमें देखो 2 न्यूक्लियस है, बाकी सब में एक न्यूक्लियस है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है. Now this structure you will find here. ये जो हमने अभी डायग्राम साइड में ड्रॉ किया है वो यहाँ पे होता है in the ovary. Okay, so it is present here. So in this structure, inside this structure, you will find these cells. So this is about the male and the female reproductive organ. Now let's see how the mechanism is carried out. The pollen grains or the male gametes are pollinated either by wind or by water or by birds or by insect. तो इनके बहुत सारे pollinating agents होते हैं. कुछ biotic होते हैं like birds, insects, animals, bats. They are called as the biotic agents. और कुछ abiotic elements होते हैं जैसे आपका wind हो गया, water हो गया, the natural elements which are not living. ठीक है, तो abiotic होते हैं. तो based on that फिर अलग अलग टाइप का pollination होता है. That will study in your class 12. तो अभी उसमें जाने का कोई जरूरत नहीं है. आप इसको सिर्फ इतना याद रखिए कि ये pollination जो होता है इनका pollen grains का अलग अलग तरह से हो सकता है. Now this is an example. Here you see कि जो honey bee है वो pollination carry out कर रहा है. He is taking nectar from the flower. At the same time जो फ्लावर में उसका एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो हनी बी के बॉडी में चिपक जाते हैं. They will all stick to this hairy structure present in this honey bee, and that will be transported to the next flower when the honey bee moves to the next flower for collecting nectar. So after pollination, the pollen tube germinates on the stigma forming a pollen tube. तो जो pollination होने के बाद pollen grain होता है, pollen grain germinate करता है into a pollen tube. तो पोलन ग्रेन से एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और उसी से पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, वो फीमेल गैमेट की तरफ, ओवेरी की तरफ आगे बढ़ जाता है, फॉर्मिंग ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पोलन ट्यूब. नाउ दिस पोलन ट्यूब विल असेंड इनटू द एम्ब्रियो सैक where 2 male nuclei will fuse with egg cell and central cell that is having 2 polar nuclei forming zygote and primary endosperm nucleus respectively. तो यहाँ पे एक चीज होता है कि जब ये पोलन ट्यूब फॉर्म होता है उसके अंदर मेल गैमेट का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है. एज ए रिजल्ट इट विल हैव 2 मेल गैमेट्स. वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट. तो ये जो 2 आपके मेल न्यूक्लियस होते हैं जो डिवाइड कर गए हैं, तो उनमें से एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग सेल और फीमेल गैमेट के साथ टू फॉर्म जाइगोट व्हिच लेटर ऑन डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो. बट जो दूसरा आपका मेल गैमेट है, मेल न्यूक्लियस है, वो फ्यूज कर जाता है सेंट्रल सेल के साथ which is having 2 polar nuclei and that will develop into primary endosperm nucleus. Okay, so that is how the development takes place. And after fertilization in flowering plants, as you know, the ovary will develop into the fruit and the ovule will develop into the seed. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में यही होता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाएगा और ओव्यूल सीड में डेवलप कर जाएगा. बट यू विल फाइंड कि कुछ और भी फिनोमिनन होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लाइक द सेपल्स एंड पेटल्स विल फॉल ऑफ एंड द ओवरी विल ग्रो इन साइज. तो ये सारे माइनर चेंजेस भी दिखाई देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नाउ दिस इज हाउ इट इज. यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं जो ओवेरी है, यहाँ बीच में आप देख सकते हैं फ्लावर में जो ओवेरी है वो डेवलप कर रहा है इनटू द फ्रूट आउटर कवरिंग, और इसके अंदर जो ओव्यूल हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं ओव्यूल,
वो डेवलप कर रहे हैं इनटू सीड. So the ovule, which is in red color, develops into the seed, again represented by red color, whereas the ovary, which is in bluish purple color, forms the fruit, which is again represented in bluish purple color. तो हर एक प्लांट में वैसे ही होता है, ovule, seed, ovary, fruit. So this is about the reproductive mechanism in case of flowering plants. तो इसको हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे आपके क्लास 12th चैप्टर में, that is reproduction in flowering plants. But for the time being, just remember this much. Okay? Thank you. Thank you, everyone.